Assalamu alaikum. Welcome to the very first episode of Rapid Response Podcast, where we'll dive deep into the basics of first response and emergency medicine. My name is Arif. I'm the coordinator of Media and Public Relations Department at First Response Initiative of Pakistan. I will be your host today, and joining me today is Mamuna. She's also a part of Media and Public Relations Department at FRIP. So, Mamunat, can you tell the audience a little bit about FRIP? What do we do? How do we function? And what our aim is? Yes, sure, Arif. So, FRIP is basically a student-run NGO, and our main goal is to empower every Pakistani with the fundamental first response skills. Since this is a student-run organization, so we basically train medical students, and then we provide free first response workshop to a diverse audience, including schools, colleges, universities, corporations, and so that we can ensure our goal to enable a nationwide network of individuals which have the basic skills to effectively manage emergencies and save lives. Okay. So, जैसे Mamuna ने बताया कि we provide free of cost workshops to different schools, colleges, universities. But अक्सर ऐसा होता है कि there are very limited number of NGOs that provide free of cost workshops. इसके अलावा बहुत सी जो workshops हम लोग करवा रहे होते हैं, there ऐसे टाइमिंग्स पे होती हैं जहाँ पे लोग आ नहीं सकते, उनके ऑफिस आवर्स में आ नहीं सकते. इसलिए we have started this podcast series, which is called Rapid Response Podcast. Our topic for today is head and neck injuries, where we will talk about the immediate first response, its prevention, and its complication. Our guest for today is Dr. Nadir Haider, who was the founding vice president of First Response Initiative of Pakistan. He is currently an associate professor at the Department of Orthopedics at the Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo. And he's also the director of research at the UBMD Concussion and Research Center. So we welcome Dr. Nadir to the podcast. Hello, Dr. Nadir. How are you? Hello कैसे and हैं आप? welcome. Thank you so much for having me, and I'm so honored to being the first interview at your podcast. Okay. So, Dr. Nadir, can you tell us a little about yourself? What did you do after your MBBS journey, and how was your journey at FRIP? Okay, so so thank you so much for asking me all of this. So I started my MBBS in Dalmel College in 2008, and that is when I met Akbar Harikar and some of my seniors who were very interested in first response, and actually specifically teaching and spreading first response to people in Pakistan, as opposed to सिर्फ वो hospital के अंदर just so patient manage करते हैं. So in 2009 is when I started working back then it wasn't called FRIP. Back then we were still figuring out what to call ourselves. So I've been with them since day one. I was actually the first person that Akbar and Omar and everyone taught how to teach CPR in level 1. So मैं literally सबसे पहला बंदा था. और उसके बाद से in 2014 मैंने अपना MBBS वो खत्म किया था, and then actually it's because of FRIP and a lot of the other activities that I was doing, that I was yeah, I actually want to pursue a career in public health rather than clinical medicine. तो मैंने अपनी US assemblies दिए जैसे देने होते हैं. And then मैंने अमेरिका आके मैंने 2-3 hospitals में specifically उनके वो brain injury monitoring centers and actually traumatic brain injury monitoring centers में थोड़े महीने काम किए थे. And then I finally found my mentor, Dr. Barry Willer. He's a very big name in severe brain injury management. He's उनने वो इतने senior है कि उनने वो जो original scales होते हैं जो brain injury grading के वो उनने बनाए थे almost 40 years ago or something. So I did my brain injury research fellowship under him, and then he encouraged me to do my PhD as well and actually go into academic medicine. So मैंने अपना 10-year track यही University of Buffalo में कर रहा हूँ, और I teach research design in the Department of Orthopedics. Or maybe PhD is in neuroscience, and I specifically am on methods of diagnosis of traumatic brain injuries. So both are बहुत basic sciences वाली research है. But yeah, और अब मैं
मेरे पास अपनी लैब है यहाँ अमेरिका में बफलो में, और मैं स्पोर्ट्स इंजरीज और मैं सर्विस मेंबर्स जो लाइक यहाँ यूएस की आर्मी होती है, तो उसके अंदर जो ब्रेन इंजरीज होती हैं, तो मैं उनकी मॉनिटरिंग की रिसर्च का, उनकी like कौन treatment availability as well as कौन treatment availabilities like possible है like किस situation में, जैसे like बहुत सारी चीजें जो like athletes like professional sports athletes के पास जो चीजें होती हैं वो एक आम बंदे के पास like available नहीं होती है, and vice versa जो आर्मी के सर्विस मेंबर्स के पास जो like treatment availabilities and options होती हैं वो भी like आम बंदे के पास वो नहीं होती. So that's about it. Okay. It sounds established and sounding career. हमारे अब यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्शन हो गया, डॉक्टर नादिर का पता चल गया है कि इज अ वेरी established at the US. अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो ओवर टू यू मैमुना. So now that we all know Dr. Nadir, it's time to move on to address the pressing concerns which so many of you guys might have regarding the head and neck injuries. So my first question for you, Dr. Nadir, is what is the major difference between a head injury and a brain injury? ओके तो ये इसमें काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ओके तो फिर इसके लिए मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेन चीज करनी पड़ेगी. तो आपका हेड ऑब्वियसली ये पूरा हिस्सा है, और आपके हेड में लाइक दैट इंक्लूड्स लाइक द स्किन, ऑल द सॉफ्ट टिश्यू, द स्कल. ठीक है, तो ये injuries of all of these things can be like head injuries, whereas a brain injury is actually damage to the brain, जो ऐसे brain का जो soft tissue होता है which is inside the skull. Now head injuries are very very common, like har din like there are millions of head injuries all over the world, but not all head injuries cause a brain injury, because the brain is usually protected inside the skull. It's only जब like बहुत sudden acceleration deceleration injury हो रही है जिसमें brain आके like skull के अंदर की तरफ लग रहा है, या brain अंदर rotational injury हो रही है, या अंदर like कोई blood vessel damage हो चुकी है brain के अंदर, so that is causing like a brain injury. So yes, so these are two very different types of injuries. Okay. So since head is like the major structure protecting the brain, so I'm sure head and neck injuries can have serious consequences. So can you tell me how common these type of injuries are in Pakistan and what some of the cases you have observed? Okay, so all right, so head and neck injuries are so common in Pakistan. Actually, the thing is, they're not just common in Pakistan, they're common all over the world. There is an estimate that there are 42 million brain injuries every year, and around 90% of these brain injuries are mild in nature. We can discuss this a bit more later, but these mild injuries, they make up the vast, like majority of, like all types of brain injuries. But unfortunately, these are also the brain injuries that are usually like not reported. Yeah, they're misdiagnosed as, like, oh, ये तो बस, like head injury होगी, तुम खुद ठीक हो जाओगे थोड़े दिनों में. तो लोग ज़्यादातर उसे report भी नहीं करते. So there is an estimate that in Pakistan, there are 81 brain injuries per 100,000 people. So, like 1 lakh लोगों में तकरीबन 81 brain injuries होंगी, like, like उनकी पूरी lifetime में. But ये बहुत बहुत low number है, because like America के अंदर almost 50% of brain injuries are not reported. So I suspect कि पाकिस्तान में भी, I mean, because हमारी इतनी अच्छी like injury reporting और monitoring और हमारा databases इतने like strict वो सब नहीं है, तो I suspect कि और बहुत ज़्यादा like brain injuries होती हैं. तो मुझे इसमें और भी थोड़ी चीजें ऐड करनी है. तो आपने पूछा था like what are the common causes, right? Okay. Yes. So the number one cause for brain injuries all over the world in all age groups is motor vehicle accidents. So like this includes car accidents, this includes motorcycle accidents, this also includes like अगर आप pedestrian है, road पे चल रहे हैं तो आपको गाड़ी लग गई, so that's also a motor vehicle accident. So the number one cause all over the world is motor vehicle and वो जो car accident होता है. बट ये नंबर चेंज होता है लाइक आपके एज ग्रुप में. तो लाइक बहुत छोटे बच्चे लाइक 1-2 साल से नीचे, उनका नंबर वन कॉज फॉर ब्रेन इंजरी इज लाइक एक्सीडेंटल फॉल्स. लाइक बच्चा लाइक ट्रिप से गिर गया या बिस्तर से रोल ऑफ होकर गिर गया, तो एक
हमारे लिए लाइक बिस्तर से गिरना एक इतनी बड़ी हाइट नहीं होती, मगर बच्चों के लिए वो ऑब्वियसली लाइक काफी बड़ी हाइट होती है। तो वो हो गया लाइक बहुत छोटे बच्चों का। और यूजली स्कूल गोइंग बच्चों का द नंबर वन कॉज इज स्पोर्टिंग एक्टिविटी। तो स्पोर्टिंग एक्टिविटी का ये नहीं मतलब है कि वो स्पोर्ट लाइक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट खेल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो लाइक खेल कूद रहे हैं पार्क के अंदर, मंकी बार्स क्लाइम कर रहे हैं, उससे गिर गए, तो लाइक वो भी स्पोर्टिंग है टेक्निकली। उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बोला जाता है। तो छोट लाइक बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में वो नंबर वन कॉज होता है। फिर अगर आप लाइक थोड़ा सा और उम्र एज में चले जाए, आप यंग अडल्ट्स में चले जाए, तो यंग अडल्ट्स लाइक 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक, इसके अंदर नंबर वन कॉज आर एक्चुअली वर्क रिलेटेड इंजरीज। तो अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई चीज आपके ऊपर गिर गई, अगर आप लाइक बाहर किसान है, फिशरमैन है, कोई भी लाइक हाई वेलोसिटी की चीज आपके ऊपर, आपके सर में लग गई, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा होता है, those are like work related injuries, उस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा है। और फिर अगर आप और ऊपर चले जाए, लाइक लाइक एल्डरली लोग में चले जाए, लाइक यूजली जो एजेड लोग होते हैं 60 प्लस और वो सब चीजें, तो उनके लिए फिर से लाइक नंबर वन कॉज फिर फॉल्स हो जाता है। आपकी कोई बूढ़ा, कोई थोड़ी सी एल्डरली औरत लाइक बाथरूम में फिसल गई, सर लग गया किसी चीज पे, तो एज ग्रुप्स में लाइक चेंज होता रहता है। तो डॉक्टर नादिर, जैसे कि अभी आपने कहा कि द मेजर कॉज जो है वो एक्सीडेंट्स और फॉल इस तरह के हैं, तो कैन यू टेल मी कि अगर वी एज अ बायस्टैंडर्स वी कम अक्रॉस अ इंजरी जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि हेड एंड नेक ट्रॉमा हुआ है, तो व्हाट आर द इमीडिएट स्टेप्स वी कैन टेक बिफोर द प्रोफेशनल हेल्प अराइव्स या बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्स? ओके, तो जब भी आपने कोई एक्सीडेंट देखा, अगर आपने वेदर आपने एक्सीडेंट देखा या नहीं देखा, सबसे पहली चीज तो आपको करनी होती है वो SRABC, सेफ्टी रिस्पांस एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन, या SRCAB, जो भी करंटली आप करंट वो प्रैक्टिस है ना, वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। बिकॉज एक्शन के बाद सब आपको चीजें प्रायोरिटाइज करनी होती है। अगर पॉसिबिलिटी है कि नेक स्टेबलाइजेशन की, सी स्पाइन स्टेबलाइजेशन की, तो एक बंदा वो करे, दूसरा बंदा पूरा लाइक रिस्पांस चेक करे, एयरवे चेक करे, ब्रीदिंग चेक करे, सर्कुलेशन चेक करे। तो वंस, बिकॉज ऑब्वियसली नंबर वन चीज तो लाइक लाइक सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना होता है। मगर वंस आपने कंफर्म कर लिया कि लाइक पेशेंट लाइक होश में है, वो खुद सांस ले रहा है, वो सब चीजें, तो और ऑल्सो कोई और मेजर सोर्सेज ऑफ ब्लीडिंग नहीं हो रही बॉडी में, तो लाइक वंस आपने लाइक काफी लाइक स्टेबलाइज कर लिया है, एंड ऑल्सो वंस यू ऑलरेडी कॉल्ड द इमरजेंसी सर्विसेज, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेन इंजरी के लिए एक आम बंदा बगैर चीजों के साथ बहुत कम चीजें कर सकता है। तो लाइक नंबर वन चीज होनी चाहिए लाइक लाइक एम्बुलेंस सर्विसेज को कॉल करने के लिए। तो वंस लाइक आपने चेक कर लिया कि लाइक बंदा लाइक थोड़ा बहुत स्टेबल है, आप थोड़ी सी चीजें कर सकती हैं जस्ट टू लाइक मेक श्योर कि यू हैव ऑल द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जब एम्बुलेंस सर्विसेज आ जाए। तो सबसे पहली चीज आपको ये नोट करनी चाहिए कि बंदा क्या कभी वो बेहोश हुआ था या नहीं, बिकॉज यूजली ब्रेन हेड इंजरी के बाद थोड़ी देर का लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, और वो यूजली 1 मिनट के अंदर लाइक बंदा वापस लाइक होश में आ जाता है। तो ज्यादातर लोगों को यूजली पता भी नहीं चलता कि अगर वो बेहोश हुए थे या नहीं। दूसरी चीज, एज अ बाय स्टैंडर्ड लाइक SRABC करने के बाद यू कैन आस्क ओरिएंटेशन कि बंदा को, ठीक है बंदा होश में है, मगर क्या उसे पता है कि उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, उसका नाम पूछ लें, टाइम पूछ लें, डेट पूछ लें। अगर बंदा ओरिएंटेड है कि वो कहाँ है, तो मोस्ट लाइकली अगर वो उसे ये तीन चीजें पता है और वो सही है, तो मोस्ट लाइकली वो ओरिएंटेड है। एंड देन ऑल्सो बस थोड़े से सिम्टम्स मॉनिटर करने चाहिए अंटिल एम्बुलेंस सर्विसेज कम। सो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऐसे हैं, बंदे के हेडेक है, इज अगर ओके, सो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा सिविलियंस ये काफी चीजें वो खुद ब खुद वो नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेंसेशंस हाथ में चेक करने का, स्ट्रेंथ चेक करने का, यूनिलैटरल वर्सेस बायलैटरल वीकनेस। तो अनफॉर्चुनेटली मैं सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एम्बुलेंस को कॉल करें और फिर एम्बुलेंस का इंतजार करें
just in case अगर कोई serious brain injury है तो like we manage कर सकता. तो जैसे कि आपने कहा कि there is not much we bystanders can do or like we have to wait for professional help. तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि the major mitigating जो हम mitigate कर सकते हैं head and neck injury को is through prevention. तो can you tell me some practical tips या कोई strategies जिसके through हम individuals को recommend कर सकते हैं कि they can reduce their likelihood for experiencing such injuries? Okay. So like you said, the number one thing is prevention. अगर आपको head injury नहीं हो रही है, I mean, अगर आप जो भी कर सकते हैं to avoid a head injury, that is the number one thing that you should do to prevent head injuries. So to prevent head injury, but the thing is that obviously you can't prevent all head injuries. So whenever you're doing anything risky, like for example, if you are on a motorcycle, whether you are driving the motorcycle or you're a passenger on the motorcycle, you should always wear a helmet because आपको नहीं पता कब ये motorcycle कभी भी accident हो सकता है. And also जो मैंने एक चीज नोटिस की है पाकिस्तान में कि हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं और काफी स्पोर्ट्स में हमें हेलमेट पहनना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लाइक बैट्समैन है, लाइक क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर बैट्समैन है तो आपको यूजुअली हेलमेट पहनना चाहिए, जो मैंने बहुत बहुत कम देखा है. अमेरिका में जैसे स्पोर्ट्स होते हैं जैसे लाइक अमेरिकन फुटबॉल और ये सब चीजें, उसमें तो ऑब्वियसली हर एथलीट को लाइक हेलमेट पहनना होता है. बट जस्ट इन लाइक यूजुअली अगर कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेल रहे हैं तो उसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हेलमेट पहने और जितना अवॉइड कर सकते हैं ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी या कोई भी हर किस्म की इंजरी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बस वही कर रहे हैं. Okay, so Okay. over to you. ओके सो अभी तक आप लोगों ने सारी इंजरीज के बारे में बात कर ली, क्या क्या हो सकता है, कॉजेस हो सकती हैं. ओके सो नाउ जब हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, डू यू थिंक फ्रिप हाउ डू यू थिंक फ्रिप कैन incorporate education about head and neck injuries into its curriculum? Like, are there any techniques? अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसकी गर्दन को स्टेबलाइज करके रखें, तो लाइक आर देयर एनी टेक्निक्स which we can do जो हमारे पार्टिसिपेंट्स को पता होनी चाहिए, which can be done in case of a head and neck injury? Okay, so I think sorry मेरा opinion है कि FRIP does a very good job for education about neck injuries because like हम explain करते हैं like helmet कैसे उतारना चाहिए to prevent like too much neck movement. हम ये भी explain करते हैं how to stabilize the neck after head injuries. So and obviously the most important, and also I think हमारे थोड़ा बहुत curriculum में ये भी है कि if there is a neck injury तो like extremities की sensation और power check करें to see if there is any nerve damage side by side to a neck injury. तो neck injury का काफी अच्छा हमने किया है. For brain injuries, depending कितनी severe है, अगर obviously severe brain injury है तो most likely the patient is going to be unconscious, तो उसमें हम focus करते हैं to like for airway breathing circulation management. We do that very appropriately. But I feel like हमने हमारा education on evolving brain injuries as well as mild traumatic brain injuries थोड़ा सा कम होता है because like for example अगर like कोई impact हो गया सर पे, वो सब चीजें तो अगर कोई bleed हो गया या थोड़ी सी चीजें, sometimes it actually takes several minutes even up to several hours for the actual brain injury to develop. Like for example पहले एक छोटी सी bleed हो गई, मगर as that expands and causes like mass effect on your surrounding brain tissues, तो I feel like उसमें हमने ज़्यादा उसके साइंस हमने ज़्यादा वो नहीं बताए हैं. And then also mild traumatic brain injury जिसमें बंदा like हर वक्त पूरा वक्त होश में होता है, तो उसकी कैसे उसे कैसे like diagnose करना चाहिए. Like we shouldn't, like मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि like कोई एक बंदा like bystander एक brain injury diagnose करे, because even as a clinician, even working with very experienced clinicians who've seen brain injuries for a very long time, even for them there is always like a little bit of uncertainty कि बंदे के पास brain injury है या नहीं, because sometimes वो बहुत मुश्किल होता है diagnose करना. तो so हाँ, maybe, so like I said, like evolving science
you know, like abhi bande ko brain injuries nahi hai, to you know, but what are the signs that this could be a brain injury? So, you know, like immediately unko hospital jana chahiye, as well as how to diagnose, like what are the signs and symptoms in which someone might have a mild traumatic brain injury. Okay. So these are really good points that I think we should incorporate our curriculum. जैसा भी आपने कुछ signs and symptoms की बात की, so can you tell us a little bit of what are the signs and symptoms if a person might have sustained a head and neck injury? So what are the immediate signs and symptoms? Okay. So obviously the main symptom is going to be pain. Now, obviously, if a head injury हो तो head में pain हो रहा है, whether it's, you know, like बंदा बोल रहा है, sorry, बंदा या बंदी, yeah, sorry, the patient Yes. बोल रहा है, you know, like सर में दर्द हो रहा है, either whether it's on the outside, या कभी कभार लोग ये भी बोलते हैं कि अंदर की तरफ दर्द हो रहा है, like they can't explain where that pain is. वो, you know, usually like आंखों के पीछे का pain बोलेंगे, या बोलेंगे सर के अंदर हो रहा है. So pain is by far the most common symptom. Okay? But that is not the only symptom. Depending on, sorry, so those are that's the sign, that's like the immediate sign of brain injury. But the evolving signs, जो मैं बता रहा था, कि fine, you know, usually people have a head injury and they will have pain, but it only becomes very, very concerning अगर pain बढ़ता जा रहा है, ठीक है? So from the time of injury to your subsequent assessments, अगर you know like आधे घंटे बाद आपने पूछा उस वक्त, और फिर से आधे घंटे बाद, you know like हर 15 मिनट बस पूछ रहे हैं, अगर headache increase हो रहा है, that is a very, very concerning sign. दूसरी चीजें देखना होता है कि अगर बंदा पहले होश में था और वो थोड़ा सा उसकी होशी थोड़ी कम होती जा रही है. So you know like they're going towards altered level of consciousness, like they're getting drowsier and drowsier. Other things to get concerned about is if someone has started vomiting after their brain injury, because usually कभी कभार ये होता है कि you know like obviously accident हुआ, बंदा you know like बंदी को you know like उल्टी आ गई, मगर अगर उसका नौशा बढ़ता जा रहा है और you know like और ज्यादा like थोड़ा सा like forcefully उल्टी वो हो रही है, that is also very, very suspective of an active bleed inside the brain, specifically in the vestibular area. So, sorry, mass effect, not vestibular area, mass effect की वजह से, you know, like Yeah. forceful vomiting हो सकती है. But और भी चीजें depending on, but those are like the immediate signs of, you know, like a evolving mass lesion inside the brain. But depending on which part of the brain is actually injured, the signs and symptoms can be very, very different. Around 70% of patients with brain injuries have some sort of visual dysfunction as well. Like उनकी आंखें track नहीं कर पाएंगी, या वो sorry, आंखों के tracking and like or gaze deviation और वो सब चीजें का मसला हो सकता है. Around 50% of people completely have balance issues, because you know obviously if you actually think about it, your cerebellum, all of your inner ear canals, all of these things, a big part of your brain is focused on, you know, like proprioception and balance. So balance के issues भी हो सकते हैं. Around 20% of brain injuries actually have cognitive dysfunction as well, because you know अगर आप खुद सोचें like आपका brain आपका computer है, और अगर वो उसमें कुछ मसले उसमें कुछ मसले हैं, तो you know like you yourself as well as, you know, like people around you can be like, wait a minute, something is wrong. He's not able to think as fast as he previously could. He's not responding to answers as previously as could, because cognitive difficulties are here. And also one of the things that always get left out is that brain injuries can also cause mood issues as well. Because you know like बहुत लोगों को like, because ये इतना आसानी से diagnose नहीं होता है, obviously not everyone reports these, because they don't think that ये brain injury का consequence है. But people can have extreme anxiety after brain injury, even when they did not have an anxiety disorder before. Under severe traumatic brain injury, so there's also something called a sympathetic storm, which is a pathological cause of anxiety, but that's a very, very rare case. So basically, depending on which part of the brain is injured the most,
उसी की तरह के symptoms हो सकता है. And also एक और चीज़ है कि just a neck injury without any head and or brain injury, an isolated neck injury can also cause a lot of these issues. Because for example, जब आपका whiplash injury होती है, right? Like for example, like झटके से आपका neck, वो हो गया. So yes, आपको pain होगा, obviously neck में pain होगा, neck के musculature में pain होगा, and if there is, like any nerve damage, alongside the vertebra damage of your C-spine, so obviously आपको sensation or strength और वो सब चीज़ों का भी issue हो सकता है. But a lot of people forget कि आपके brain के 3 major cranial nerve actually provide proprioception to the brain. It actually tells the brain where the head is in response to the neck. So if there is any pain in the neck, if there's any inflammation in the musculature, that can affect the proprioception signals. So neck injuries can also cause balance issues. Lots of people forget that thing. And also, lots of people who have like neck injuries, काफी बार ये neck injury का pain radiate होकर आपके सर में आता है. So people even complain about head pain, headaches when they have an isolated neck. So isolated neck injury. So neck injuries can also cause headaches. It can cause balance issues. And also एक बहुत unique चीज है जो currently it's just a hypothesis. I mean, it's still in the basic sciences of being like research and stuff. But if you have a neck injury and there is constant inflammatory biomarkers being released from this area, because obviously अगर damage है तो inflammation कहीं ना कहीं से हो रही है. This inflammation can now actually trigger a lot of your ganglions and your neural ganglions and actually give you like migraine type headaches as well. This is just a theory, but this is very common. It is very common that patients develop migraine type headaches after long and chronic untreated neck injuries. I know थोड़ा सा लंबा आंसर हो गया था. Yes, I think obviously brain injury तो like a lot of different symptoms are sign symptoms आ सकते हैं, तो हमें ये सब चीजें देख लेना चाहिए. अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर नादर, like after the immediate first response हम लोग केयर प्रोवाइड कर चुके हैं, they are waiting at the hospital. उसके बाद what are the some common complications or potential complications that a person might face during a head and neck injury? What are some complications? Okay. So the biggest complication for like head and neck injuries, it is very unlikely that a severe or a moderate traumatic brain injury is going to be missed because unke signs and symptoms itne severe hote hain कि like unless someone is telling someone to not actively seek care, I mean वो हर बंदा हर वक्त like hospital जाने की कोशिश करेगा if they have a severe or a moderate brain injury. But with mild brain injuries, just like कुछ हुआ है, patient को definitely लग रहा है कुछ मसला है, मगर इतना बुरा नहीं है कि like वो डॉक्टर के पास जाएगा. या नेक का मसला है कि like ओ गर्दन खिंच गई थी, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, मगर खुद ब खुद unfortunately चीजें ठीक नहीं होती हैं. और अगर आप if you keep on using your neck जब injury होती है तो over time it actually gets worse and worse and worse. So the big thing would be like there are some signs and symptoms, like for example, जो oculomotor assessment होता है, थोड़ा सा balance function test होता है, cognitive सवाल पूछने होते हैं, and also doctor एक वो in-depth neurological assessment करता है, आपका full body, sensation कैसा है, power कैसा है, reflexes कैसा है. तो मैं advise करूँगा कि एक professional से assessment करवा लें that actually is looking for like brain injury. ये नहीं कि बस आप ER के पास गए, emergency room के पास गए और ने बस like जो चोट आपने बताया थी वही चोट bandage करके आपको वापस भेज दिया. Like कोशिश करें कि एक proper assessment करवा ले एक डॉक्टर से. Okay, over to you, Maimuna. So डॉक्टर नादिर, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो है वो गर्दन खिंच जाती है और झटका वगैरह आ जाए, तो can you discuss the importance कि अगर आप कोई head and neck injury से deal कर रहे हैं तो how important is it to ensure spine stabilization? Okay. So whenever जब भी head injury होती है, it is always important to always consider the neck, because the neck is injured in 50% of cases of head injuries, because obviously
your head is connected to your neck, so there's a very, very high chance that, you know, there will always be a neck injury whenever there is any forms of head trauma. So I think spine stabilization is very important because that prevents worsening of your neck injury. Okay, अगर neck injury हो चुकी है, as long as you know आप ज़्यादा neck को ज़्यादा move नहीं करें, like you know, और nerve अगर कोई compress हो रही है आपका वो brachial plexus और वो जो सर्विकल स्पाइन से जो पूरी आपकी जो नर्व्स निकल रही हैं, अगर वो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है, मे बी मूव लाइक हेड को मूव करने से और थोड़ी डैमेज हो सकती है, तो जस्ट प्रिवेंटिंग more damage to the neck is the most important thing that people can do as a bystander. Obviously, जब हॉस्पिटल जब इमरजेंसी रूम जाएंगे तो ज्यादा असेसमेंट होगा, you know, एक्सरे कर सकते हैं to check for bone like you know अगर फ्रैक्चर है, MRI करना चाहिए to see if there's any muscular any soft tissue damage and nerve damage. So importance of, you know, stabilizing the neck to prevent more injuries. So I feel like we have covered all the signs, symptoms very well. So what I want to ask next to you is, okay, what are some common mistakes or common misconceptions that you have heard people के वो लोगों को हो सकती हैं about the first aid related to head and neck injuries? Okay, तो सबसे बड़ी misconception है कि all brain injuries are associated with loss of consciousness. लोग बोलते हैं कि अगर आप बेहोश नहीं हुए हैं तो आपको brain injury नहीं हुई है. That is not right at all. Less than 50% of brain injuries are associated with loss of consciousness, and the number is actually a lot higher. That I think it's actually closer to less than 75% of mild traumatic brain injuries are associated with loss of consciousness. अगर तो just because एक बंदा बेहोश नहीं हुआ उसका ये नहीं मतलब है कि उसे brain injury नहीं हुई है. तो that is like the number one misconception that people need to remember. And the other thing is कि लोग बहुत बोलते हैं कि okay head injury हुई, बंदा थोड़ा सा disoriented हो गया, थोड़ा सा वो like confusion, थोड़ी सी confusion हो रही है, वो सब चीजें हैं. So बोलते हैं like घर जाके आराम कर लो, ये बेहतर हो जाएगा थोड़े दिनों में. So usually around like more than 50%, it's actually 50 to 70% of brain injuries do get better. Like थोड़ा सा उनका symptom resolution हो जाता है within the first week to 10 days. Magar if it does not get better within the first week to 10 days, then the chances of this getting better on its own is very, very minimal. Because this is no longer a physiological disturbance. This is actually, there is some organic cause for your muscle, and they have to be treated with rehabilitation or like depending on what type of injury it is. So loss of consciousness is not always the case, and that brain injuries, unless like ये थोड़े दिनों में ठीक नहीं होगी, ये खुद ब खुद नहीं ठीक होने वाली, and like you need to go for physiotherapy, you need to go for some kind of rehabilitation to get all of this function back. And also एक और बहुत important चीज, that brain injuries, although वो cure नहीं हो सकती है, you can do good rehabilitation for every single impairment कि बंदा functionally back to baseline वापस आ जाए. So my last question regarding head and neck injuries for you is कि as you said कि जो है वो बच्चों में भी और ज़्यादा recreational activities करते हुए भी बहुत ज़्यादा head and neck injuries होती हैं. So what role do you think schools and such sports organizations can play in promoting the safety and awareness? Okay, so this is actually like my main line of work here in America. So like injury monitoring कैसे कर सकते हैं? Obviously the number one thing to do is like student जो like sports खेल रहे हैं, not just student जो sports खेल रहे हैं, like हर student को ये पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि education की brain injuries क्या होती हैं. Brain injuries हो सकती है अगर आपके सर में obviously चोट लगे, और like you should avoid them. अगर वो थोड़ा सा risky behavior avoid कर सकते हैं तो उनकी like head and neck injuries के chances कम हो सकता है. दूसरी चीज है
जो मैंने अमेरिका में बहुत बहुत कॉमन मैंने देखा है, जो मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा है, कि जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा होता है, वेदर इट्स प्रैक्टिस, ये नहीं कि कोई ऑर्गेनाइज्ड इवेंट हो रहा है, even if it's practice, whether it's like club sports, even if it's like a semi-professional team, जो बस like कभी like not like a full team, there is always one clinician on the side for all injuries, not just head and neck injuries, for all injuries. अमेरिका में उसे certified athletic trainer कहलाते हैं, या ATC. So these people have like basic musculoskeletal injury like management techniques. So like वो bandage कर सकते हैं, bleeding रोक सकते हैं. They are also there observing all the people to they also observe if there are any head injuries that could be like a brain injury, because like I said, head the students and the people playing the sports, but also having someone at least not on the sideline. Well, at least, sorry, they should be at the sideline. To अगर कुछ भी मसला हो गया, एक बंदा है, क्या चीज severe है, and as soon as they can identify कि okay, this is actually a serious thing, foreign ambulance को call करो. So ये दो चीजें. ओके सो नादर, अभी तक हम लोगों ने हेड एंड नेक इंजरी की काफी डिटेल में बात कर ली, उसके साइन सिम्टम्स की बात कर ली, फिर उसके बाद उसकी प्रिकॉशंस, व्हाट इज द इमीडिएट प्रोटोकॉल्स. So like let's move to the other part of our topic, which is concussion. So like can you tell me what is exactly is a concussion, and is it any different from any other type of brain injury? जैसे अभी हेड एंड नेक इंजरी की बात की, like हेड और ब्रेन इंजरी से क्या कुछ अलग होता है concussion में, या फिर वो भी कुछ इस जैसा ही होता है? Okay. तो हाँ, थैंक यू. ये समय एक बहुत बहुत important सवाल है कि okay. So concussion का जो medical definition है, it is a very straightforward, it is a very specific definition. तो आपको पता है brain injuries are graded on the Glasgow coma scale. So there's severe, which is like 8 and below. There is moderate, which is 12 to 9, या 12 to 8 या 12 to 9. I'm sorry, मैं थोड़ा सा वो confuse कर रहा हूँ. And then mild, which is 13 to 15. So 15 is the best, and like the lower you go, technically there's no such thing as a 0, there's always a 3. So 3 is the lowest you can go. So 3 is like someone is not responsive, someone's not opening their eyes, they're not moving away from pain, they are in all essence completely non-responsive. And 15, person is fully conscious, person is oriented, and person is responsive to pain. ठीक है, ये injury classification होती है. So a mild traumatic brain injury is the 13, 14, 15, whereas a concussion is the mildest form of a mild traumatic brain injury. Now I'll explain that why it's called the mildest form of a mild traumatic brain injury. Just because it's the mildest form doesn't mean that this is not an important thing, because unfortunately, concussions are by far the most numerous of all brain injuries, and the fact that they cause they're so common, like compared to like severe injuries, they're actually more of a public health burden than severe brain injuries. So brain injuries, okay, so a concussion by definition is an injury on the cellular level, whereas all other brain injuries are actually like not, they're not just at the cellular level. So concussion, so on MRI, so concussion की definition में ये भी है कि like अगर आप X-ray, CT, MRI कोई भी advanced imaging करें, so everything will look completely normal. So you cannot physically identify like any sources of problems within the brain due to like trauma, but there is something going on. So because I'll explain the physiology of why that happens. तो आपको पता है ना, आपके brain में the cells are called neurons. Neuron का एक cell body होती है, एक लंबा सा axon होता है, and that axon has to maintain like an ionic potential, वो जो sodium potassium होता है, to be able to transmit that electron, to transmit the action potential. So basically brain instrument, sorry, okay, ये आपका सर है,
ये आपका spine है. Okay, so whenever there's like sudden deceleration, there's usually a lot of like bouncing back of the brain. And specifically the area over here, especially जब like थोड़ा सा rotational damage होता है, the neurons inside it वो थोड़ा सा stretch होता है. Okay, so because they stretch, but they stretch, but they're not like ripping. Okay, so this isn't, you haven't gone into cell death yet. You've just gone into like stretching the cells. If you stretch these cells, तो membrane की थोड़ी permeability बढ़ जाती है और उसकी वजह से पूरा sodium potassium ionic imbalance like वो कम हो जाता है. So the brain, these cells, in response to this, what they try to do is they try to fix this ionic potential. जो sodium potassium pumps होते हैं वो upregulate करते हैं, but unfortunately it's not able to maintain that potential and it runs out of energy in this process. So during this process, the brain, the neuron is actually very bad at conducting signals. Usually this traumatic stretching, ये जो पूरा ionic imbalance, usually ये 7 to 10 days में ये खुद ब खुद like थोड़ा सा normalize होने की तरफ जाना शुरू करता है, because the neuron is still alive and it's still able to repair itself. So concussions, like is an injury at the cellular level. It is an injury that is expected to normalize in 7 to 10 days, whereas all other brain injuries, they are not expected to normalize within like 10 days, because all brain injuries, unfortunately, if they're not concussions, they are going to be permanent to some degree. And the third thing is so physiology, transient nature, and then yes, there is nothing, there's no X-ray or image में कुछ नजर नहीं आता. So concussions are actually like a clinical diagnosis. There is no blood test or anything that can diagnose a concussion. तो like हर वक्त confusion होता है कि okay, अगर मैं भी patient को देख रहा हूँ, उसको ये मसले हो रहे हैं, but मुझे patient का पहले का नहीं पता. अभी उसे like थोड़ा सा cognitive dysfunction हो रहा है. Was this an issue before their concussion or was it a new symptom? Like like you really have to, unless you know the patient like beforehand, you yourself as a clinician cannot decide this. अगर उससे थोड़ा बहुत, I mean obviously अगर बहुत obvious balance मसला है तो वो तो काफी clear हो जाता है, मगर अगर उसका balance थोड़ा सा off है, was he or she उसका balance पहले से थोड़ा सा off था या अभी से थोड़ा सा off है. अगर बंदे को अब post traumatic headaches हो रहे हैं, like post traumatic migrainous headaches बहुत common होता है, but migrainous headaches are also very common in the population. And if you have a family history of migraines, then you are probably going to have migraines as well. So is this because of the current injury, or is it because like पहले थोड़ा मसला था जो अब बंदी बोल रही है कि अब ये like मैं ये मसला ज्यादा नोट कर रहा हूँ because वो ज्यादा like they're trying to think of like क्या मसले हो रहे हैं. So this is a concussion. So it's the mildest form of mild traumatic brain injuries, and by far more than 90% of all brain injuries are concussions. Okay, so I think that was a very detailed explanation. आपने हर चीज बहुत अच्छे से बता दी. जैसे भी आपने बताया कि जो concussion होता है, it doesn't show on imaging. We can see on CT or on MRIs. So like, how do we differentiate it from the normal head and neck injuries? Are there any signs and symptoms that differentiate it from the head injuries or brain injuries? Okay, so well, concussion, like I said, it's a functional impairment because you can't see any damage in the brain. You have to see कि बंदे की function अगर कम हो रहा है या नहीं. So usually head injuries, the ones that do not have any involvement of the brain, will just be like a cut, could be a fracture of the skull. Well, technically a fracture of the skull. If it's associated with any damage to the dura underneath, then that's most likely a severe brain injury. But if there's just like damage to the skull or the soft tissue, the muscle or the skin, so these other head injury होती है, and they don't have any like functional impairment नहीं होता उनको, balance के मसले नहीं हो रहे होते हैं, vision के मसले नहीं हो रहे होते हैं, because it's just an isolated injury to just the soft tissue. Whereas
I think I'm so sorry. I mean, can you ask that question I again? asked how do we Like, differentiate on clinical basis in between a concussion and a head injury? How we differentiate on clinical okay. basis? Okay, so clinical वही basis. अगर functional impairment हो रही है of like balance, vision, cognition, mood, then this is suspected of a brain injury. but अगर सिर्फ like सर में चोट नजर आ रही है और कोई functional impairment नहीं हो रही, then this is most likely a head injury. और neck injury का तो मैंने पहले आप बता दिया था. Okay. So like आपने बहुत सारे ऐसे cases देखे होंगे तो like can you tell us what are some common mistakes that people make while dealing with the concussion? Like और normally अगर आपने बताया कि इतने वो नहीं होते इतने severe नहीं होते तो like वो घर पे छोड़ देते हैं proper doctor के पास लेके नहीं जाते तो like what are some common mistakes that people do The while dealing? biggest common mistake है कि medical definition तो concussion की बहुत fixed है, मगर unfortunately real life में जो लोग जो चीजों को concussion बोलते हैं, they are a lot more severe than what a concussion really is. Like लोग तो moderate traumatic brain injury, बंदा बेहोश हो गया, सर से खून निकल रहा है, उससे भी बोल देते हैं वो ये तो concussion हो गया. And then lots of people go and read up कि okay concussion का तो recovery 7 to 10 days में, तो वो ज़्यादातर they don't really think that this is like a big deal or not. But if something is not recovering within 7 to 10 days, and this is not a concussion, so this needs to be treated by as a traumatic brain injury. Because traumatic brain, like concussions, ज़्यादातर खुद symptom management or थोड़ा बहुत rest and like some physical activity, so like better हो जाते हैं within a few weeks. But if they're not getting better, these people need rehabilitation. They need to go to a physiotherapist. They need to go to like either a physical medicine wala doctor to see, like क्या-क्या मसला हो सकता है, क्या-क्या मसला है balance में, क्या-क्या मसला है vision में. And then they will need dedicated physical therapy to get their eye function back. They will need dedicated physical therapy to get balance function back. They will need speech pathology wali therapy, neurocognitive neuropsychologists, to get their cognitive function back. So the biggest misconception I've seen is like mild traumatic brain injuries or even more severe injuries को भी concussion बोल देते हैं और फिर उसकी ज़्यादा treatment नहीं लेते हैं because they think ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा. Okay. So बस my last question would be for you was like और जैसे आपने बताया कि हम लोग उसकी कंकशन में उसकी रिहैब होती है हम लोग उसकी रिकवरी पीरियड होता है 7 to 10 days का like are there any specific activities or behaviors that we should avoid during the recovery period? Okay, so historically, this is like before 2015 and for like decades and decades, like 50 years at least. If people had a concussion or a mild traumatic brain injury, everyone used to be like, you have to sit in a dark room, you have to, avoid any stimulation and wait until you get better. Now, unfortunately, sitting in a dark room, getting cut off by all your, like the things that you need to do, your work, if you're like, अगर आप काम करते हैं, अगर आप स्कूल में हैं, तो like आपके दोस्तों के साथ आप नहीं मिल सकते हैं, आप स्कूल में उसमें जा सकते हैं. This itself causes, like mood issues and cognitive issues, especially in adolescence. Like, अगर, they're used to being social and stuff, और अचानक से बोल दिया कि वो social activities नहीं करें, वो सब नहीं करें, कमरे में बैठे, तो उनका भी mood थोड़ा off होगा, cognitive like dysfunction, like थोड़ा सा, like their thinking will be a bit slow. And also with athletes, तो अगर कोई बंदा बहुत active है, उसे कंकशन हो गया, तो पहले लोग बोलते थे कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ वो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज लाइक आपके सिम्टम्स और बहुत बुरे हो सकते हैं. मगर अगर आपने एक एथलीट को बोल दिया कि वो स्पोर्ट्स, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करे, सो दे आर गोइंग टू गेट एक्सरसाइज दे आर गोइंग टू गेट headaches because they're not exercising. They're going to have like balance issues or something because they're not exercising to their level, और उनकी बॉडी थोड़ा सा like confusion में जाके डिकंडीशन हो रही है, उनको सब लाइक उस बॉडी को तो पता नहीं हो रहा कि लाइक बंदा क्यों नहीं नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है. सो तो पहले हर वक्त लोग बोलते थे कि सिट इन अ डार्क रूम. तो दैट ट्रीटमेंट वाज सो स्ट्रेंज बिकॉज कंकशन के जो सिम्टम्स होते हैं, हेडेक्स, मूड डिसऑर्डर्स, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, vision issues and balance issues, like a lot of these symptoms would go down, but then the symptoms of just sitting in a dark room and being socially isolated would start going up. So people would, the clinician would never know
अगर बंदे का कंकशन खत्म हो गया और ये उस दूसरी चीजों के सिम्टम्स हैं. So fortunately, thanks to a lot of the randomized control trials that I have done, I've actually an author of the first two randomized control trials that actually did an active intervention. So we had a small group, we had our placebo group who we told, do relative rest, sit in a dark room, don't do anything. And then we had another group. We put them on a treadmill. We identified, like what level, what heart rate they were getting their symptoms. And then we told them to do very light physical activity and rehabilitation below that. And we found that they recovered a lot faster and they were clinically treated and cleared without any issues. हमने, like post-recovery monitoring भी की just to make sure कि, like हमने accidentally बंदे को like ज़्यादा जल्दी clear नहीं कर लिया or anything. And thankfully, to a lot of these randomized trials, they've actually changed international practice management guidelines thanks to some of the trials that I've done. Okay. Okay. I think that was a great explanation. I think that covers most of the session. Sorry, head and neck injuries के बारे में बात कर ली. It was great having you with us. Thank you for taking your time with us, Dr. Nadir. बहुत अच्छा लगा, and you explained everything in great detail. And I hope आपको भी हमारे साथ मजा आया होगा सेशन करने में. अगली दफा भी अगर कोई भी सेशन होगा, कोई चीज के बारे में बात करेंगे, we will invite you. Okay. Yes, I enjoyed this so much, and I'm so happy that you guys are doing this because, like more awareness, more about, like traumatic injury management and everything. It is so important in Pakistan. All right. Good luck with everything, and Assalamu alaikum. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.